Hello everyone, welcome to Gyanbodh Academy. I am Madhulika and today I have an article from the Kurukshetra magazine. We'll discuss about this and let me tell you that this will help you in your all the competitive examinations, especially the civil services paper. And today's topic is of the sustainability of rural entrepreneurship. So this will be helpful for your GS-3 topic, which covers your economy. Plus it can also be helpful for your paper the society part in GS-1. Why? Because it is talking about the rural people, how we would help them or how we can bring prosperity to those area. So we will look into it, but before we begin, let us see to the subtopics we will be taking in this article. First, we will see what is rural entrepreneurship or what is rural enterprise. First, we will discuss about that. Here we will also discuss the two broad classifications of rural entrepreneurship. We will also look into the importance that why rural business, rural startup is needed in India. Apart from that, we can also see to the some positive changes that are being done in this field, plus the challenges faced by the rural people in setting up such enterprise. Additionally, we will also see some suggestions, recovery measures, and lastly we'll come to the role of the government schemes, policies, what it is doing, what it is promising, and all of that. So let's begin. The headline reads from Kurukshetra magazine: Sustainability of Rural Enterprise, Opportunity, Challenges, and Way Forward. These are the broad classifications. So a topic will be prepared thoroughly on this basis. So let us come what is rural entrepreneurship or rural enterprise. So rural entrepreneurship is a crucial aspect of Indian economic development and growth. Uh, these are business entities that promote revenue generation and act as agent of social change at grassroots level. Please remember the key term. It is very crucial for Indian economic development and growth. There is a difference between what is economic growth and economic development. Be clear with that. Apart from that, it will promote revenue generation, means profit होगा, लोगों की कमाई होगी, profit और revenue आएगा, उससे ये business setup होगा अगर rural areas में. Plus it will act an agent of social change at grassroots level. Social change मतलब चाहे वो पॉवर्टी पे चेंजेस लाना हो, लोगों की मेंटालिटी में चेंज लाना हो, या अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे चेंज लाना हो बिटवीन रूरल पीपल, या एवरीथिंग इज वी आर टॉकिंग is related to the people of village or rural people. And here it is telling at grassroots level this social changes will be brought. grassroots level मतलब जो लोग धरती से जुड़े हैं, ऐसे वो किसान हुए, फिशरमैन हुए, इंटरमीडिएट मैन हुए, जो भी विलेज साइड के जो स्मॉल छोटे बड़े वर्कर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे नापते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी that it plays a important role. It will play an important role in holistic development of rural economy and contribute to economic growth of the nation. तो क्या होगा इससे? रूरल इकोनॉमिक तो बढ़ेगा ही, प्लस नेशन वाइज भी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगा. And here we can note down a data, a fact you can note down, which is written: the official data released on April 30th, 2022, India has more than 63 million MSMEs, out of which 94 are micro enterprises. Here it is talking that एक डेटा रिलीज़ हुआ था जिसमें ये पता चला था कि इंडिया में 63 million MSMEs है. Now I don't need to explain you what is MSMEs. It is very clear that we are talking about the minimum support price which the government of India provides to them. And here in that data it tells that 94% are micro enterprises. Micro enterprises मतलब जो हमारे इकोनॉमी का मेजर परसेंटेज है ना, वो स्मॉल छोटे छोटे वर्कर्स या छोटे छोटे बिजनेस पे डिपेंडेंट है. जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेज इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्टार्टअप, स्मॉल बिजनेस, लाइक फ्यू पीपल कम अप, 10 लोग 20 लोग आए, एक स्टार्टअप खोले, एक बिजनेस खोले. तो वैसे स्मॉल स्मॉल बिजनेस है जिसमें इंडियन इकोनॉमी निर्धारित है. 94% of them is occupied in our economy. Plus we will also see that
And this establishment of large number of profitable enterprises in the region can bring in government investment, attract private participation, generate local employment, form partnerships, secure funding, and also lead to savings in business entities. So these are the some certain advantages why we should be uh, going for rural entrepreneurship or promoting that. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स हम लोग बात करें कि विलेज में बिजनेस या स्टार्टअप्स कैसे आना चाहिए, उसके बारे में बात हो रहा है. तो व्हाट विल इट विल डू, इट विल ब्रिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, सरकार इन्वेस्ट करेगी, पैसा लगाएगी तो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है वहाँ पे. इट विल इन्वॉल्व प्राइवेट पार्टिसिपेशन, मतलब लोग, private people, they without depending on government, they can start up, they can do business whatever they want. It will generate local employment. जब अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो लोगों का ज़रूरत पड़ेगा कि वो आके संभाले, सर्विस दे. It will secure funding, savings in the business entity. However, there are certain challenges regarding these enterprises, and these are from private, prevalent societal and gender based biasness, lack of understanding of business, entrepreneurship, access to skills in running such enterprises. So these are the major challenges. अब ये सोचने वाला बात है, ये कोई अपना लॉजिकल बात नहीं है एकदम, कि क्यों हम चैलेंज क्यों आएगा किसी भी विलेजर या कोई भी रूरल पीपल को बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए. वी ऑल नो दैट देयर इज़ लिटरेट इलिटरेट पॉपुलेशन देयर. People are uneducated during the in the rural areas of a country. That is why they have least knowledge about business entrepreneurships. उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो लोग स्किल नहीं डेवलप कर सकते. स्किल नहीं डेवलप कर सकते तो स्किल में वो लोग मास्टरी नहीं कर सकते, और फाइनली वो लोग एंटरप्राइजेस नहीं सेटअप कर सकते. प्लस दे आर ओवरलोडेड विद जेंडर बायसनेस. वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ जेंडर बायसनेस. अभी भी विलेजेस में आप देखते हैं औरतों को आगे नहीं आने दिया जाता है, वो पर्दों के पीछे रहती हैं या उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं होती है. तो these are some gender biasness which can be seen in the rural area, which is the major challenges for going for such a project. प्लस हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द रूरल एंटरप्राइजेज आर बेस्ट वे टू यूज़ लोकल रिसोर्स. ये आप मार्क कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे नो हाउ टू यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेज सो दैट दे कैन लीड टू द प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इनसे बेहतर कोई नहीं जानता क्यों लोकल रिसोर्सेज, बिकॉज दे आर द वंस हु आर ब्लेस्ड विथ लोकल ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, बीट सॉइल, लैंड, वाटर. तो वो लोग जुड़े रहते हैं ग्रास रूट लेवल पे, और वो लोग बेस्ट तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना जानते हैं ताकि वो बिज़नेस में भी हेल्पफुल हो सके. देयरफॉर इट विल ऑल्सो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लेवल्स ऑफ माइग्रेशन. अगर मान लीजिए बिज़नेस रूरल एरिया में शुरू हो रहा है, अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो क्यों वहाँ के लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आएंगे सिटीज़ में या फिर टाउन्स में जॉब के लिए. वो लोग अपने ही शहर में या अपने एरिया में रूरल एरिया में ही काम कर सकेंगे. उनको जॉब की तलाश के लिए शहरों में आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो माइग्रेशन का लेवल भी कंट्रोल होगा. प्लस to ensure the development of a viable business model to better support aspiring rural entrepreneurs, it is fundamental to ensure manpower, money, material, machinery, understanding of market, and all of that. So here it is telling some of the solutions ताकि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो सके. उसके लिए क्या क्या चाहिए, मैन पावर मतलब फोर्सेस चाहिए, मतलब लोग चाहिए, लेबर चाहिए, मनी चाहिए. ये मनी या कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कौन देगा, सरकार देगी, क्योंकि वो लोग गरीब रहते हैं. मटेरियल चाहिए, जो भी इनको कुछ प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए भी या तो वहाँ नेचुरली अवेलेबल होगा या तो सरकार प्रोवाइड करेगी. मशीन्स चाहिए, बिना मशीन्स के प्रोडक्शन कहाँ से होगा, तो उनको मशीन्स भी चाहिए. प्लस दे नीड अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट मीन्स उन लोगों को पता चलना चाहिए मार्केट में क्या डिमांड सप्लाई का चल रहा है, डिमांड सप्लाई का क्या रिलेशन चल रहा है, क्या चीज़ का डिमांड है, क्या चीज़ बिकेगा, एंड ऑल ऑफ दैट. Here we will also see that there are two broad classifications of rural enterprises, and you can go through it. I will move on to what is the importance of rural entrepreneurship in India. मतलब इंडिया में रूरल इंटरप्राइजेज या स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज क्यों प्रमोट होना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है. So we have already looked at the major importance, that is resource utilization. So what is this talking, that rural industries foster like appropriate utilization of local resources like raw material and labor for productive purposes, thus enhance productivity.
दे ऑल्सो मोबिलाइज रूरल सेविंग्स विच हेल्प टू एनहांस रूरल फंडिंग। तो क्या होगा, सबसे पहले बात कि उन लोगों को बेस्ट तरीके से पता है लोकल चीज़ों का, लोकल रिसोर्स क्या होता है, लैंड, लेबर, सॉइल, वाटर, ये सब नेचुरल रिसोर्स होता है। उन लोगों को पता है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए बेस्ट वे में, चाहे वो फार्मर्स हो या फिशरमैन हो या कोई भी हो। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी देयर इज अ डिफरेंट, you can look into it. Plus it will mobilize savings and it will also lead to funding in the rural area, profit आएगा उस एरिया में। सेकेंड इज़ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वी ऑल नो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो इट विल क्रिएट ओपनिंग्स, इट विल ब्रिंग ओपनिंग्स फॉर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। लोग जाएंगे जॉब के लिए, उनको जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। And the basic issue of large scale unemployment and underemployment in rural area will be efficiently solved through rural industrialization। मीन्स कि लार्ज स्केल, सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम इज़ ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो टर्म याद रखिएगा, यू शुड बी वेरी मच रेडी विद दिस टू टर्म, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। प्लस देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। तो दिस कैन बी ऑल्सो बी यूजफुल फॉर यू पीपल, बी रेडी विद दीज ऑल टर्म। तो जो ये मेजर प्रॉब्लम्स हमारे देश में चलता है, बिजनेस स्टार्ट होगा तो ये भी रूरल एरियाज़ में हट जाएगा। ये प्रॉब्लम हट नहीं जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। प्लस अवॉइडिंग द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पॉवर्टी एक्सेट्रा हैज़ फोर्स्ड रूरल पीपल to head towards urban areas for livelihood. It creates a rural urban imbalance. Under this situation, rural entrepreneurship can provide employment and will discourage rural people to migrate from rural areas in search of job. तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि रूरल अगर एरियाज़ में बिज़नेस सेटअप होगा तो वहाँ के लोग यहाँ पे हमारे अर्बन सिटीज़ में जॉब के लिए नहीं आएंगे। और क्या होता है, इधर नहीं आएंगे तो अपने एरिया उधर ही वो लोग जो भी पॉवर्टी वगैरह या लाइवलीहुड के लिए आना पड़ता था, वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। Next point is artistic activity promotion. The rich heritage of rural India is conserved by protecting and promoting handicrafts and art through rural entrepreneurship. We all know that ये आजकल के मॉडर्न लोग तो कुछ हैंडीक्राफ्ट्स या आर्ट्स या कुछ होता है मशीन वर्किंग या मशीन चलाना, सुई चलाना, ये सब नहीं जानते। ये कौन लोग जानते हैं, बेसिकली रूरल पीपल आज के। तो फिर इट विल प्रमोट आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इन दिस एरिया और इट विल ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ये आपके GS पेपर 1 में जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, तो यू कैन नोट इट डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल चेक ऑन सोशल ईवल्स। ये दूसरा आपका इम्पॉर्टेंस है। चेक ऑन सोशल ईवल्स क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ रूरल एंटरप्रीनियरशिप कैन डिसमिस सोशल ईवल्स लाइक पॉवर्टी, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, पॉल्यूशन इन सिटीज़ एक्सेट्रा। तो क्या होगा, जब वहाँ पे जॉब रहेगा, वहाँ पे इंटरप्राइजेज रहेगा, स्टार्टअप रहेगा रूरल एरिया में, तो क्या होगा, गरीबी जाएगा। स्लम्स का जो ग्रोथ होता है, स्लम्स कहाँ आपका रहता है, बेसिकली अर्बन एरियाज़ में। क्यों रहता है, क्योंकि ये पीपल माइग्रेट करके रूरल एरिया से सिटीज़ यानी अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं तो ये लोग अपना गंदगी वाले ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ रोड साइड ये लोग रहने रहते हैं, वहाँ पे कचरा होता है, वहाँ पे डर्ट होता है, तो वो स्लम्स का वहीं पर वो लोग घर बना के रह जाते हैं। प्लस पोल्यूशन होता है सिटीज़ में, तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये जो सोशल ईवल्स है वो भी चेक होगा। देन नेक्स्ट इज encourage the rural youth. The rural entrepreneurship can promote rural youth and expose them to several paths to adopting entrepreneurship and promoting in their career. तो यूथ रहेंगे जो वहाँ के बच्चे या नौजवान, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा रूरल एरिया में। एंड लास्टली हम लोग देख सकते हैं स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, स्लम्स नहीं होगा, सोशल टेंशन नहीं होगा, सोशल इश्यूज़, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा। बी अवेयर व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बी अवेयर विद दैट। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस है विच आर बीइंग अवेलेबल इन दिस फील्ड।
farmers community is becoming aware about the value of natural resource, मतलब रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में वो सबसे बेस्ट जानते हैं क्योंकि वो ग्रास रूटेड है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर emerging in rural areas. Traditional skills based sector like handlooms and handicraft are being started. तो हम देख सकते हैं हमारे मोदी जी भी कैसे मन की बात वाला जो चैनल आता था उसमें अब बोलते थे कि कैसे वो प्रमोट करते थे हैंडलूम्स को या हैंडीक्राफ्ट को बाय दी रूरल पीपल. सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल. ये आपका आर्ट एंड कल्चर वाले पेपर के लिए हेल्पफुल हो सकता है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. नाउ लेट अस कम टू द चैलेंजेस. व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर डिफ़िकल्टी आ रहा है फार्म विलेजर्स के लिए या रूरल पीपल के लिए टू स्टार्ट बिजनेस इन अ रूरल एरिया. सो ये सेम चीज़ें जो भी हम लोग पढ़ें कि जेंडर बायसनेस है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं है, प्लस एंटरप्रेन्योर्स हु हैव द करेज टू वर्क ऑन अ बिजनेस आइडिया often face challenges in understanding the need of the market, then their production process, the sustainability for manufacture. ये सब हम लोग सब अभी पढ़ें कि क्या मेजर चैलेंजेस है. इसके अलावा आप देख सकते हैं अदर चैलेंजेस विच इंक्लूड इज़ द एबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल, adoption of technology and the diversity to their product range. Plus we can also see that there is a lack of infrastructure, there is several competition from urban market. Plus there is lack of government support also, we can say. Means in terms of theory it is the government support is there, but actually in the ground we cannot assure if the government is really supporting or helping them out. And now let us look at some recovery roadmap. Means what are some of the suggestions or some helping measures they could be given for them to understand or get into such process. So first let me read out. India has made tremendous progress towards creating a new business environment to enable increased participation of stakeholders in the workforce via enterprise creation. Acceleration of these number of possible through the introduction of some of the key models such as marketing cooperative to promote products manufactured by rural enterprises, thereby eliminating middlemen. The establishment of common facility centers, particularly for production, can also be boost rural entrepreneurship. Building business through capacity building and training is crucial for entrepreneur success, coupled with access to financial linkage at a reasonable interest, flexible repayment option, then the security. It will all lead to the growth in the sector. So it is talking about that how these some could be some of the suggestions. Here is major, you can note it down from here, that these are, there should be financial linkage, there should be some security purpose, there should be some payment options and all of that to cope up with such problems. There is an acute need for rural skill and entrepreneurship for development programs in rural areas, thereby increasing the volume of economic activity. In turn would lead to an increase in the number of rural enterprises in the region and subsequently increase the percentage of employed self-employed population in the region. Skilling and entrepreneurship can be done through various means. The following are the three broad approaches that can be adopted. So here we will look at the three broad approaches we need for skilling and entrepreneurship. See, this is another suggestion that जब तक स्किल डेवलप नहीं होगा, जब तक हम लोग उन लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे किसी स्किल को डेवलप करने के लिए, उसकी मास्टरी होने के लिए, तब तक उनमें उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करे और वो चल जाए अच्छा से, उसका भी कोई गारंटी नहीं है. So certain are the skill and entrepreneurship developing qualities. How could be that done? Let us look at this. Just you can go through it. It is a very basic model. You can just reach that. Skilling and entrepreneurship through project model, skilling and entrepreneurship development through cluster development approach. Then you can also even go through this skilling and entrepreneurship development through
incubation. Sorry. So you can just go through all these. Apart from that, let us look to the final point. What is the government role, initiative, or schemes in this regard? So the government of India Startup Village Entrepreneurship Program, that is SVEP, has been initiated with the purpose of assisting entrepreneurs to establish their business enterprise in rural areas. You can remember the name of this scheme. It is very important. You can give it as a point of suggestion in your exam and conclusion point. Second, we will look for a nation like India. The role of the government in supporting and scaling rural enterprise is of pivotal importance. The Government of India Startup Village, this is SVEP, has been initiated with the purpose of assisting entrepreneurs to establish the business enterprise in rural area. So it is the same point it is talking about. The scheme supports existing enterprise as well as the new enterprise with their unit establishment at village level. Besides helping in rural entrepreneurship to assess finance, CRP EP, which is your community resource person enterprise promotion, also creates to provide business support service to rural enterprise. So first scheme which we look to is SVEP, then CRP EP. The second scheme is also helping in this regard. It not only aids in settling, you can remember the aim of the scheme, it not only aids in setting up enterprises but also ensure that sufficient hand-holding support is offered to these enterprises, thereby ensuring their longevity in the market, that how long they will sustain in the market and help in the growth of the uh, industries. It is fundamental to instill a culture of entrepreneurship to ensure establishment of rural area. Rule this is this then this is the third suggestion and the third initiative by the government, that is rural self-employment training institutes have addressed by by providing skill and entrepreneurship development training programs to rural unemployed youth, thereby assisting them in commencing their own business units. This is third step by the government. Then there is the Ministry of Skill and Development and Entrepreneurship. This is also executing in Pradhan Mantri Yuva initiative for forming entrepreneur training and education across the country. MSDE is implementing entrepreneurship expansion by supporting existing entrepreneurs, and it is also monitoring such entrepreneurs. Then there is a scheme of day NRLM. This is also a scheme by the government. So this scheme, it will support the group of women entrepreneurs in rural area, and the government has also come up with collaboration with Tata Trust to establish FDRVC, which is Foundation of Development of Rural Value Chain, to develop and implement value chain projects through the promotion of large-sized uh, producer enterprises. And in conclusion, we can look at the same points that manpower, money, material, these are all basic to start any of the enterprise or promote any such business ideas in the rural area. So that's all for today. Hope you like the video. Thank you, and have a wonderful day ahead.